doing? I'm okay. I guess everybody busy this weekend. A long weekend. Enjoyed a nice weather for the long weekend. That's it after this. Cold coming in slowly. Om apopaspраsyat Agamartham tu devanam gamanartham tu rakshasam kurve gantaravam tatra devatahvana lanchanam ganthasthitaya garudaya namaha haste pushpam grihitva sankalpaha. We commence puja and satsang this morning with sankalpa. Let us pray together, everyone. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavarnam Dhyay Sarvignopashantaye Prananayamya. Om Bhuhu Om Bhuvaha Ogam Swaha Om Mahaha Om Janaha Om Tapaha Ogam Satyam Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Apo Jyotir Swamritam Brahma Bhur Tareva Lakhinam Sudinam Tareva Tara Balam Chandra Balam Tareva Vidya Balam Daya Balam Tareva Lakshmi Pate Gauri Pate Thyanghriham Smarami Shabhe Shobhane Muhurte Adya Brahmana Dvitya Pararje Shvetavaraha Kalpe Saptame Vaiva Swatmanuvantare Ashtavimshatitame Kali Yuge Kali Pratham Charane भूर्लोकांतर्गत उत्तर अमेरिका खंडे कैनेडा देशे एजाक्स नगरे संकटमोचन श्री हनुमान मंदिरे शुभे दिन शोभने मुहूर्ते येषां यजमानानां. Please take your names in your minds, everyone. येषां यजमानानां लोका समस्ताः क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयु आरोग्यम
ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं चिन्तितमनोरथवाप्त्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थम रामदूत वीर हनुमत श्री आंजनेय स्वामी प्रीत्यर्थम धर्माटका मोक्षम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अद्य अहम महागणपति पूजनम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजनम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र पूजनम राधा कृष्ण चंद्र पूजनम सदा शिवलिंगाभिषेकाराधनं च करिष्ये इति संकल्प्य अपोपस्पृश्यात् पुष्पं गृहीत्वा श्री गणेश ध्यानं विप्रीत गणेश जी प्लीज क्लास्प योर हैंड्स। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नृषण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि आवाहयामि श्री गणेशाय नमो नमः। आवाहन काले ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यमाचमनीयं शरीरे स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमिदमाचमनीयं समर्पयामि। ओम अर्चना करिष्ये। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम फालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम हेरंभाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। धूपदीप नैवेद्यं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः इति मंत्रेण ओम दिव्यमंगलदीपं दर्शयामि। दीपानन्तरमिदमाचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेद्यं प्रसाद। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं कृष्णोऽध्यौ संवर्तता पद्भ्यां भूमिश्रोत्रात् तथा लोकागम कल्पयन्। ओम प्राणे स्वाहा पने स्वाहा व्याने स्वाहा उदाने स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणिमात्मा सर्वं महानिवेद्यं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। ताम्बूलं च समर्पयामि। पुष्पं गृहीत्वा श्री गणेश प्रार्थना। We bow our heads in devotion to Shri Ganesha. As we conclude puja to him, we seek his blessings. Children are going back to school. Last week we had special Saraswati Puja. We pray that Ganesh bless all the children and youths, inspire them so that they may be focused in their studies. May he bless them with bal, strong, keep them strong in terms of their devotion and focus upon their studies, and inspire their intellects. Shri Ganeshaya Namaha. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Ekadantaya Vidmahe वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। मूषिकवाहनमोदकहस्ते चामरकर्णविलम्बितसूत्र वामनरूपमहेश्वरपुत्र विघ्नविनायक
गणपतिगणपाद नमस्ते गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीगणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् ॐ मोदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते पदज्ञकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुर्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यपुञ्जरं नरेतरोदरं वरं परिभवत्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोऽतिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजं चित्यरूपमन्तहीनमन्तराय पिन्तरम् निरन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमाधरेण योऽन्वहं प्रजल्पतिप्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् आरोग्यतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजन। ओम दुर्गा देवी ध्यान। विपरीत माता जी। ओम विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थिताभीषणां कन्याभिकरवालकेतविलसद्धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदे शिखेतविष्मां चापं गुणं तर्जने विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरा दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। ध्यायामि आवाहयामि महालक्ष्मी देवी ध्यानम्। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह महालक्ष्मे नमः। ध्यायामि आवाहयामि महासरस्वती देवी ध्यानम्। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगाद्विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना महासरस्वत्यै नमः। ध्यायामि आवाहयामि। ॐ
अथ पाद्यं जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निरहाति वेदः स नः परशरति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुन्दरतात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे तरसे नमः। श्री जगदम्बायै नमो नमः। अर्चना। ओम दुर्गायै नमः। ओम माहेश्वर्यै नमः। ओम शिवप्रियायै नमः। ओम मन्दारवासिन्यै नमः। ओम अर्कायै नमः। ओम गिरिसुतायै नमः। ओम धात्र्यै नमः। ओम शिवप्रियायै नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम विकृत्यै नमः। ओम विष्णुवल्लभायै नमः। ओम चतुर्भुजायै नमः। ओम धनप्रदायिन्यै नमः। ओम कमलवासिन्यै नमः। ओम नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। महासरस्वत्यै नमः। ओम वीणाधारिण्यै नमः। ओम चतुरानन्दवल्लभायै नमः। ओम ज्ञानप्रदायिन्यै नमः। ओम श्रीप्रदायिन्यै नमः। ओम पद्मवासिन्यै नमः। ओम नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूपदीपनैवेद्यम्। ओम आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं चातवेदो मावः। श्री दुर्गादेवी नमः। महालक्ष्म्यै नमः। महासरस्वत्यै नमो नमः। धूपमाघ्रापयामि। धूपानन्तरं विरमाचमनीयं समर्पयामि। दिव्यमङ्गलदीपं चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायथ मुखारिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत। दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि। श्रीजगदम्बिकायै नमो नमः। इच्छाशक्त्यै नमः। क्रियाशक्त्यै नमः। ज्ञानशक्त्यै नमः। दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि। दीपानन्तरं विरमाचमनीयं समर्पयामि। सर्वरक्षान् धारयामि। महादेवी नमो नमः। नैवेद्यम्। ॐ अन्नं चतुर्विधं स्वादुरसैषद्भिः समन्वितं नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्तिमेह्याचलं कुरु। ओम सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी माँ तेरा पार न पाया। तेरा पार न पाया मैया। तेरा पार न पाया। सुन मेरी पर्वतवासिनी माँ तेरा पार न पाया मैया। तेरा पार न पाया। जगदम्बायै नमः। महालक्ष्म्यै नमः। महासरस्वत्यै नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम अष्टभुजायै नमः। सिंहस्कन्धाधिरूढायै नमो नमः। ओम अष्टौ भुजङ्गीं महिषस्य मर्दिनीं सशङ्खचक्रां शरशूलधारिणीं तां दिव्ययोगिं सहजातवेदसीं दुर्गां सदाहं शरणं प्रपद्ये। श्री जगदम्बायै नमो नमः। ओम अथ
Kunjika Stotram. Shiva Uvacha. We will chant Kunjika Stotram from Durga Saptashati and seek the blessings of Mataji. Om Shruno Devi Pravakshyami Kunjika Stotram Uttamam Yena Mantra Prabhavena Chandi Japa Shubho Bhavet Nakavacham Nargala Stotram Kilakam Narahasyakam Nasuktam Napi Dhyanam Cha Nanyaso Nachavarchanam Kunjika Patha Matrena Durga Patha Phalam Labhet Ati Gohyataram Devi Devanamapi Durlabham Gopaniyam Prayatnena Swayonireva Parvati Maranam Mohanam Vashyam Stambhana Uchatanadhikam Atamatrena Samsiddheta Kunjika Stotram Uttamam Atha Mantraha Om Aim Hrim Klim Chamundaye Viche Om Lam Hum Klim Jum Saha Jwalaya Jwalaya Jwal Jwal Prajwal Prajwal Aim Hrim Klim Chamundaye Viche Pralaham Samlam Cham Bhat Swaha Iti Mantraha Namaste Rudra Rupinyai Namaste Madhumardini Namah Kaitavaharinyai Namaste Mahishardini Namaste Shambhahantre Cha Nishubhasuraghratini Jagratam Hi Mahadevi Japam Siddham Kurushvame Emkari Srishti Rupayai Hrimkari Pratipalika Klinkari Kamarupinyai Bijarupe Namostute Chamunda Chandaghati Cha Yekari Varadayini Viche Cha Bhaira Nityam Namaste Mantra Rupini Dham Dhim Dhum Durjate Patnim Vam Vim Vum Vagadishwari Kram Krim Krum Kalika Devi Sham Shim Shum Me Shubham Kuru Hum 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 Kar Rupinyai Jam 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 Banharini Bhram Bhrim Bhrum Bhairavi Bhadre Bhavanyai Te Namo Namaha Am Kam Cham Tam Pam Yam Yam Sham Vim Dum Em Vim Ham Sham Dijagram Trote Trote Diptam Kuru Kuru Swaha Pam Vim Pum Parvati Purna Kham Khim Khum Kechari Tatha Sam Sim Sum Saptashati Divya Mantra Siddhim Kurushvame Iram Tu Kunjika Stotram Mantra Jagarti Hetave Abhakte Naiva Datavyam Gopitam Raksha Parvati Yastu Kunjikaya Devi Hinam Saptashati Pathet Natasya Jayate Siddhir Aranye Rodanam Yatha Iti Shri Rudrayamale Gauri Tantre Shiva Parvati Samvade Kunjika Stotram Sampurnam Om Shanti 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 Jaikara Shiravalida Bol Sache Darbar Ki Jai Shri Ramachandra Pujanam. Next with the puja of Prabhu Shri Ram. Shri Ram Parivar including Hanumanji and Radha Krishna Bhagavan. Ramachandra Dhyanam Pushpam Gritva Om Nilam Bhujam Shah Malako Malamam Sita Samaropitvam Bhagam Pano Mahasayak Charu Chapam Namami Ramam Raghuvanshanatham Shri Sita Lakshmana Bharata Shatrugna Hanumat Samet Ramachandraya Namaha Hanumate Namaha Shri Hanumadhyanam
मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः। ध्यायामि आवाहयामि। पंचमुखी हनुमते नमः। श्री हरमरस्त्राय नमः। रामचंद्र परिवाराय नमः। श्री राधा कृष्ण ध्यान। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्यायामि आवाहयामि। श्री वेंकटेशाय नमः। ओम कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमानिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु त्रैलोक्यं मंगलं कुरु त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। श्री वेंकटेशाय नमः। सत्यनारायण स्वामिने नमः। बालकृष्णाय नमः। श्री चक्रदेवे नमः। सालिग्रामदेवाय नमः। पाद्यं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो जायागिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनान् शने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः। पुष्पम् ओम पुष्पं समर्पयामि। रामचंद्राय नमो नमः। ओम रामाय नमः। ओम रघुनाथाय नमः। ओम नाथाय नमः। ओम सीतापतये नमः। ओम दशरथनंदनाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। श्री रामचंद्रमूर्तये नमः। ओम सीतादेव्यै नमः। ओम शेषनागाय नमः। श्री राम भक्ताय नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हं हनुमते नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम राम भक्ताय नमः। ओम आंजनेयाय नमः। ओम महाबल पराक्रमाय नमः। ओम लंका विध्वंसिने नमः। ओम अर्जुन मित्राय नमः। श्री हनुमते नमः। पंचमुखी हनुमते नमः। हनुमतस्ताय नमः। रामचंद्र परिवाराय नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। ओम कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम कमलनाथाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गोपीजनवल्लभाय नमः। ओम राधावल्लभाय नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। राधा देवी नमो नमः। ओम वेंकटेशाय नमः। ओम सत्यनारायणाय नमः। ओम बालकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री चक्रदेवे नमः। ओम सालिग्रामदेवाय नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। धूपं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः गुरुतरस्य द्वैष्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। श्रीराम जय राम जय जय राम
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Mangal Bhavan Amangal Hari Dravahu Sudashirath Ajur Bihari. Jai Jai Veer Hanuman Ram Doot. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ram Naam Rasya Veer Hanuman. Prabhu Man Basiya Shri Hanuman. Prabhu Man Basiya Shri Hanuman. Prabhu Man Basiya Shri Hanuman. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Ram Doot Jai Hanuman. Om Nabhya Asirantariksham Shishnodhyau Samavartata Padbhyam Bhumshashotraat तथा लोकागम कल्पयन घंटी बजाओ प्राणे स्वापने स्वाव्याने स्वा उदाने स्वा ब्रह्मणि महात्मा महानिवेद्यम समर्पयामि तांबूलमाचमनीयम समर्पयामि। अब हम सब श्री हनुमान चालीसा गाएंगे। ऑल ऑफ अस सिंग हनुमान चालीसा टुगेदर। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी। मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे। मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मेरे सपने को साकार कर दीजिए। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हारहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर।
अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आंधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठन गावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहि सकय कहाते, तुम पुकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, मुद्रिका देवी मुख माई, जल दिलांगी गई अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय ग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे,
सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाति की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, जयनाथ हृदय महाडेरा, जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तन संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष हनुमत, रक्ष रक्ष श्री रामचंद्र, रक्ष रक्ष श्री कृष्णचंद्र। अनंत कोटि रक्ष नमस्कारान् समर्पयामि। ओम सांब परमेश्वराय नमः। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। अब शिव पूजा होगी। नेक्स्ट वीक तो पूजा तो भगवान शिव। When you do Abhishek, the first time you go up, please join the line from the back again. You'll come for Abhishek twice. The generosity and kindness from so many devotees. There's so much milk in the fridge. We need to use it out, please. So when you come and you offer for the first time, please join the line again from the back. So this way everybody gets an opportunity to come up twice and offer Panchamrit as well as Dud. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. We'll touch the different parts of our body. You can start by placing your right hand on top of your head. And then you'll follow Panditji, the Panditsam, and we'll touch our whole bodies. And ask Bhagavan to bless us with the greatest wealth. That's his good health always. Om Asya Shri Rudradhyaya Prashna Mahamantrasya Aghora Rishihi Anushtup Chandaha Sankharshanamurti Swarupo Yosavaritya Paramapurusha Esha Rudro Devata. Om Namah Shivayeti Bijam Shivatarayeti Shaktihi Mahadevayeti Kilakam Shri Samba Sadashiva Prasara Siddhyarte Jape Vinyogaha.
ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ओम चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः। अनामिकाभ्यां नमः। ओम ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओम अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। ओम दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। ओम चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट्। ओम निरूरपशुबन्धात्मने कवचाय हुम्। ओम ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम्। हाथ जोड़िए, वी क्लास्प आवर हैंड्स। ओम आपाताल नभस्थलांत भुवन ब्रह्मांडमा विस्फुरत्। ज्योतिस्फाटिकलिंगमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्ता मृतैः। अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन्। ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपरं विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम्। ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः। कंठे कालाकपर्दा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः। त्रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटितविभवा शाम्भवा मूर्तिभेदाः। रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत अनुशृण्वन् ऊतिभिः सीदसादनम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम शंच मे मयश्च मे प्रियंच मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे अमृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुरिनञ्च मे। ओम शांति शांति शांति। Please come everyone for Abhishek. Again, you offer for the first time, then you join the line from the back again. We'll do Abhishek twice today. Namo Bhagavate Rudraya, Namaste Rudramanyavatote Shave Namaha, Namaste Astu Dhanmane Bahubhyamutate Namaha, Yateishu Shivatama Shumbha Bhuvate Danoho, Shiva Sharabhyaya Tavataya no Rudramidaya, Yate Rudra Shiva Tanora Ghora Papakashini, तया नस्तनवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिशं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिगं शिव पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा न सर्वमिज्जगत् यक्ष्मगं सुमना असत् अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यभिषक् अहिगिश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वा आशयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणौत बभ्रुसुमङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रता सहस्रशो वैशागं हेड ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपादृशन्नदृशन्नुरहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृदयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये यस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराट्नियोर्जां
याश्च ते हस्यैषवपराता भगवपा अवतत्य धनुस्वगं सहस्राक्षसते शुधे निशील्य शल्याणां मुखा शिवो न सुमना भव वे जन्दनकपर्दिन विशल्य वाणवागम् उत अने सन्नशेषवा आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीरुष्टमहस्ते बभूवते दनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय दृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो युषिधिस्तवारे अस्मन्निधे हितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः। You can let the children them touch with their parents. Please don't give them the whole glass because they spill it. You can touch with the parent. We continue the Abhishek again. Once again, you join the line from the back again. Become as quietly as possible. We do Lingashtakam. चलिए मेरे साथ हम सब गाएंगे ओम नमः शिवाय 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 ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जदुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ओम नमः शिवाय 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 देव मुनि प्रवनार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ओम नमः शिवाय 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 सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ओम नमः शिवाय 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 कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ॐ नमः शिवाय 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 देवगणार्चित सेवित लिंगम भावर भक्ति भिरेव चलिंगम दिक्कर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ॐ नमः शिवाय 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 अष्टदलोपरि वेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ॐ नमः शिवाय 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 सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ॐ नमः शिवाय 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 लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नमः शिवाय देवाय सच्चिदानन्दमूर्तये नमो वेदान्तवेद्याय योगिनां गुरवे नमः। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो
की कृपा से सब काम हो रहा है। पटवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पटवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हो कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरी, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफान हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री रामचंद्राय नमः। अथ रुद्राष्टकम्। ॐ नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपारं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूत
कोटिप्रभा श्रीशरीरम् स्फुरन्मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मभेदस्वरूपं नमामि शमीशान चलतु कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश्य चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान नमामि शमीशान शिवाय नमः. Those of prasad, please bring your prasad. We'll offer prasad at this time. Nayavadumanatha padarvindam. Prasad, please bring your prasad. Bhajanti haloke pare vanarana natavat sukham shanti santapnasham प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशान न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघताताप्यमानो प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो
नमामि शतीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शतीशान नमामि शतीशान नमामि शतीशान रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदते इति श्री गोस्वामी तुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। नमः शिवाय शिवाय नमः। नमः शिवाय देवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय मुख से भज ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय मुख से भज ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यह दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला यह दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी पिंजर प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पिंजर प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम 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 नमः
सदाशिवाय नमो नमः। ओम जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा ध्यान करे हम। सिमर मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगावो। होवे घट उजियारा। नमामि शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगा कर स्वर संगीत बहाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे ऐसा डमरू बजाया। तेरी याद भुला के जग में। तेरी याद भुला के जग में। दुख पावे संसारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। We contemplate on Bhagavan Sri Ram this morning. We thank him for this opportunity to be involved in Satsang and Puja this morning. It's a long weekend. Many of our friends enjoying the long weekend. But we are blessed to be in Satsang this morning. We pray for the entire world. May Bhagavan continue to shower his blessings on everyone. We also pray for the children going back to school. As I said earlier, last Sunday we had a special Saraswati Mahapuja for all the children. Knowing that this week is a long weekend, they'll be enjoying the long weekend. We offer special prayer for them as well as they start their school year. May Bhagavan, may Saraswati Ma bless them so that they can focus on their studies. Om
first about to Bhagavan Shri Ram. Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tatulyam Ram Nam Varanane Atulit Baldhamam Hem Shailavadeham Danujavan Krishanum Jnaninam Agraganyam Sakal Guna Nidhanam Vanaranam Adhisham Raghupati Priya Bhaktam Vat Jatam Namami Shri Sita Lakshmana Bharata Shatrughna Hanumat Samet Shri Ramachandraya Namaha Shri Hanumate Namo Namaha. We bow to the lotus feet of Saraswati Ma. May she bless all the children, bless all of us with knowledge. Om Veenadhare Vipulamangaladana Bhaktartinashini Viranchi Harisha Vande Kirti Pradhe Akhila Manoratha He Maharhe Vidya Pradayini Saraswati Namini Nityam Ya Kundenda Tushar Har Dhavala Ya Shubhra Vastra Vritha Ya Veena Vardanda Mandita Kara Ya Shveta Padmasana Ya Brahma Chuta Shankara Prabhritibhir Devai Sada Vandita Samam Patu Saraswati Bhagavati Nishesh Jadhyapaha Nishesh Jadhyapaha Mahasaraswati Namo Namaha. Ram Ram. आवाज नहीं आ रही है. Can't hear you here. Ram Ram. I know we have a small congregation this morning, but I like to hear when you say Ram. It is the most beautiful name. So those who have been coming for the past couple of weeks, we started this discussion from the Uttarakhand of Ramcharitamanas. Will be a continuation from the past 2 weeks. We've been looking at saintly qualities. And as a spiritual aspirant, we should have some of these qualities. Some of us, it may be difficult for us to practice some of them, but we must start. We must take baby steps towards attaining self-realization. We have to grow in this spiritual path. So we must practice some of these qualities. So last week, just to recap last week, just look at my notes here from last week. So last week we look at one beautiful chaupai. Because of time, we had Saraswati Puja for the children. And we look at Ko Malachitta Dina Paradaya, Mana Bachakrama Mama Bhakati Amaya. And Ko Malachit, a spiritual person or one who has saintly qualities, it's always tender-hearted, always kind. Dinana Paradaya, such a person is compassionate to the less fortunate, compassionate to the entire world. Manna Bachakrama Mama Bhakati Amaya. Such an individual cherishes guileless, genuine devotion in thought, word, and deed. And Sabahimana Prada Apu Amana. Such a person gives respect to everyone and does not want anyone to show him respect because of the person's humility. You know, this is a very significant line here. A spiritual person does not want to be placed upon a pedestal. One who truly understands spirituality does not want to be placed on a pedestal, does not want everyone to go and worship him or give reverence and respect to him or her. People who believe like that, those are not saintly qualities. We see sometimes some of our leaders, sad to know, religious leaders across the board, all religion, they demand in certain situations people pay respect and honor them. That's an indication. That's an unsaintly quality.
After this discussion, my friends, Sri Ram will talk about unsaintly qualities, and we will study those as well in the coming weeks. So, Sabahimana Prada Apu Amana. The devotee does not want anyone to show him or her respect. It's just a humble person. And the perfect example is our dear Hanumanji. You know the great example when it comes to humility? Than Hanumanji. None can even come close like Hanumanji when it comes to humility. He shows respect and reverence to everyone. And Bharata Prana Sam Mamate Prana. Such an individual who has some of these qualities, and he talked about more the previous weeks. Such a person is close to me, is dear to me as my own life. These are the words of our Prabhu Sri Ram. That is why we should aspire to have some of these qualities. We'll study the other chaupai this morning, but first, हम लोग गाएंगे. इसके बाद हम लोग we'll sing it first, then we look at the meaning. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Vigat Kam Mam Naam Parayan. Vigat Kam Mam Naam Parayan. Santi Virati Vinati Muditayan. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. 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 शीतलता सरलता मैत्री द्विज पर प्रीति धर्म जनयत्री. श्री राम जय जय राम. 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 श्री राम ने कहा, श्री राम कंटिन्यूज, बिगड़त काम mama nama parayana. An individual, a spiritual person, should be free from all sensual desires. Mama nama parayana, should be devoted to my name. See, my friends, desire, as long it is, if it's a sensual desire, it will take us down a road where there will be no contentment. In front of Ganeshji, you'll always see a little mouse in front of Ganeshji. That's his vehicle. On a close analysis, why the mouse is there? The mouse teaches us the mouse represents desire. One desire can take us to a complete ruin. Take, for example, if a mouse gets into a barn with grains, back home, we used to have a mouse problem back home. You cover your towel, you cover your grocery, and they get in there, they can cause major damage. So likewise, if this mouse gets into the barn, it will destroy all the grains in the barn. Likewise, one desire that is sensual will take us on a road that we will never find contentment. It will take us to complete ruin. So we really have, on this spiritual path, we really have to be careful when it comes to sensual desires. Sensual desires are like a raging fire.
The fire never says, I have enough. Every time you pour fuel, the fire keeps blazing. That's how sensual desires are. And from one to the next to the next. And eventually, it will take us to complete ruin. So my bhakta, a saintly person, bigata calm, does not have sense. Such a person controls those sensual desires. So that's why in this spiritual path, we have to take care of our raga and dvesha, the things that we like and things that we do not like. We have to have a samatva, balance. So it takes time to meet to a situation where we'll be free from all sensual desires. We can't say tomorrow I'm going to practice spirituality and I'll reach to that stage. No, it comes with constant practice. Let's take another example. I hear this all the time from devotees. Panditji, I want to become a vegetarian. But I started good 2 or 3 days and I go visit my family and you know what I had in front of them. So I had to break it. I had to stop being a vegetarian. The moment you try to do something spiritual, that is when you will be tested. Bhagavan sometimes wants to see how strong we are, how much willpower we have. So we have to choose to be in the spiritual path or choose not to be. If we want to be in the spiritual path, it takes time for us to grow. And we'll meet to this stage, Bigata Kam, where we control our desires. Then the next one, Nama Parayan. The devotee loves Bhagavan, is dedicated to the name. Okay, I'm going to ask you a question, but don't answer me, right? How often do you chant Bhagavan's name within 24 hours? How often do you say Ram, 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 Krishna, Krishna, Om Namah Shivaya, any name? That's why when you come to the temple, I force you to say Ram, Ram sometimes. Because his name is so beautiful, Pyare. Ra, A, and Ma. The numerical value of Ra, A, and Ma in Sanskrit, one Ram is equal to the numerical value is 54. Each Sanskrit character has a numerical value. So you say, and nobody says Ram, we say Ram, Ram. So 54 and 54 is 108. You only say Ram, Ram twice, like you're chanting Bhagavan's name 108 times. Look how much punya you're getting. Always Ram, 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 Ram. Any name of Bhagavan. But you must, within 24 hours, chant the name of Bhagavan. Because the name is the only thing that will purify the heart. Why? Kali Yoga Keval Nam Adhara. Only the name of Bhagavan can help us in this age. That's why it's called Kali. Kali has many meanings. Kali means machine as well. It's the age of machinery, and we can see computer and machinery taking over, replacing humans when it comes to doing work. So the Kali Yuga, it's hard for us to sit and do meditation and penance. Please take Bhagavan's name. Anything you're doing. You can never call Bhagavan's name in vain. In some cultures, you don't call God's name, you can call it in vain. But you can never. When you're yawning, you're sleeping, you're walking, you're eating, whatever you do, take Bhagavan's name. So one who's devoted to me, a saintly person, Mama Nama Parad, is always, this individual has this likeness for his name, for the name of Bhagavan, and is devoted to chanting the name. The other qualities are Santi. A spiritual person is always peaceful. A saintly person, as a matter of fact, the aura of the saint is so strong that when we are in close proximity of the saint, we just feel connected to that individual. Dharmic people are always very peaceful. And another quality is, I mentioned this quality, we're talking about being peaceful. Dharmic people, they don't talk too much. Truly spiritual people, ज़्यादा नहीं बोलते. हम लोग हमेशा भक्ति है, बकवास करते हैं. Dharmic people don't speak too much. And we speak too much sometimes, and we speak things that we should not speak, and we get in trouble. Try your best to be peaceful and calm. Santi Birati. A saintly quality is dispassion. The person is always peaceful and calm. Has no passion for material things. Again, it takes time for us to grow to this level. It does not come overnight, my friend. It takes a lot of abhyas, a lot of practice.
But if we can't come to this stage, then what happens? We have to continue the cycle of birth and death. We don't want to come back in the samsara again. Some of us would like to come back. But for those of us who want to fulfill the purpose of human existence, we have to practice this passion. The next quality is binati. Bhaktas of Bhagavan are always humble as well. You know, we should not misinterpret humility to mean a person who does not have the ability to react to situation. The bhakta has the ability to react to situations. If you criticize the bhakta, or physically, or verbally abuse a bhakta, the bhakta has the ability to do it, but the bhakta chooses not to do it. That's the difference between a samsari and a bhakta. You and I, people say things, we react to them. They push us, we want to push, we want to get back even to them. But a bhakta would always remain calm and peaceful, always a humble person. He or she can react to the situation, but the bhakta chooses not to do that. The other quality is muditayan. Devotees of Bhagavan are always happy. They always have a smile upon their face. For some reason, they have this joy within that is difficult to put in words. Bhagavan continues in the other chaupai. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. 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 Sitalta saralta yantri. Sitalta saralta maitri. Vij pad preeti dharma janayantri. Vij pad preeti dharma janayantri. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. 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 Sitalata. Tranquility is such an important attribute of a devotee. Sitalata, saralta. They're always guileless. They have no hidden agenda. Mayatri, they're also very friendly to everyone. Dvija pada preeti dharma janayantri. And they always are very respectful to the sadhus, the saints and sages. They show tremendous respect to them. These are some of the noble qualities of a saint or a bhakta of Bhagavan. Dvija pada preeti dharma janayantri. You know, all the great religions of the world, all spiritual path, teach us that we should always be friendly to everyone. It doesn't take much to say a kind word. You want to know how you're friendly when you walk down the road or look at, we don't want to judge anyone, but sometimes you walk down the road and you see people are so serious. And sometimes you say hi or morning to them, like they're surprised. Oh, this person said something to me. When you go for your walk next time, or you walk down the road and you see anyone, just say hi or morning. It doesn't take much. If you see a Hindu person who's a Hindu, Ram Ram Namaste. I've seen it sometimes, and the people are taken aback. Oh, someone spoke to me today. Because most of the time we're so stressed out and we're focused on what we're doing. And we fail to recognize other people. We must be able to see Bhagavan every year. Pyare Siya Rama Mai Sab Jag Jai. So, humility, see Bhagavan in everyone, be friendly to everyone. Practice self-control. Don't have too many worldly desires. The Chaupai is saying, free from desire, but I'm adjusting a little bit. Try not to have too many. Because we're all we're traveling the spiritual path, and we're like little children traveling this path. We'll be mature later on. But slowly we have to take steps gradually towards understanding who we are and developing a relationship to Bhagavan. We look at one more chaupai. Shri Ram Jai Ram
Jai Jai Rama, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai ए सब लक्षण बस ही जासुर जाने हूँ तात संत संततपुर श्री राम जय राम जय जय राम 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 समदम नियम नीति नहीं डोही समदम नियम नीति नहीं डोलही पुरुष बचन कबहु नहीं बोली श्री राम जय राम जय जय राम 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 ए सब लक्षण बस ही जासुर an individual, any individual, regardless of race or status in society, anyone who has some of the qualities that we just talked about, Jasu Tata Santata Santatapura, know that person to be a saintly person. So anyone who has some of these qualities. And again, a saint, sadhus dress in a certain way. Those who have taken the vow of sannyasa, they have to wear the yellow clothing, meaning that they have burnt all of their karma in the fire of knowledge. So that's why the sadhu, a true sadhu, wears orange clothing, representing the fire of knowledge. But for anyone who has these qualities, this sort of person doesn't have to dress a particular way. As long as the mind entertains some of these qualities, such a person can be called a sadhu. Samadhamma niyama nahi doli. Such a person who has sama, josham man ki nigraha. A saint is one who has control over the mind. Niyam, dam indiro ki nigraha. So one who has control over the mind and the senses. It's so easy for us to talk about it, but it's so difficult to control the mind. You're here in a split, here now, and a split second you can be another part of the world. So fast is this mind. And a beautiful example is used in Bhagavad Gita. We see, most of the Bhagavad Gita, you look at the picture in front, you will see Bhagavan Shri Krishna holding the reins. And we have the horses, 5 horses that he sends. And he like hold the reins like that, which is the mind. You must allow the mind to control the 5 senses. If not, if one horse, one of the senses run amok, they go in a different direction, there will be confusion. The whole cart with the horses can get into an accident. That's what happens to you and I. One sense sees something, he wants it. They see something, we want it. We hear something, we want. So like all the senses going in different directions. So there's no control over the mind. So Bhagavan is saying that the saint has control over the mind and the senses. Purusha Bachan. Purusha Bachan referred to being speaking to people in a rude manner. So a saint, Purusha Bachana Kabhu Nahi Dole, a saint never speaks harsh words. A sadhu, a sant would never speak harsh words. You and I, people say things to us and we get angry. We react to situations. But a true sadhu would never speak harsh words. Although we see sometimes, I've seen some videos in India, around the world, people abuse physically and verbally abuse sadhus. And they would not say, kuch bhi nahi karte hai. They don't say anything, they just go along their way.
So true sadhu is one who has control over his speech. Sadhu would not speak harsh to anyone. Tulsidas ji writes in the other doha, Ninda astuti ubhaya sama. Ninda astuti ubhaya sama. Mamta mam pad kan. Mamta mam pad kan. Te sajan mam pran priya. Gun mandir sukh kunj siyavar. Ramchandra ki jai sharanam. This is a difficult one, pyare. Ninda astuti ubhaya sama. Ninda ka matlab someone speaks something not so nice about you. Astuti is one who praises you. Someone has something good to say about us, we like that person. Ye to mera mitra hai, this is my friend, this person is good to me. Someone has something not so nice, we hate that person. A saintly person, a sadhu, a bhakta, ubhaya sama, remains the same. Remember, my friends, in this world, people will always say good things about us and bad things about us. Try not to listen to their words. The same person who praises you today has something bad to say about you tomorrow. It's a fact, we've experienced this. As a bhakta, samatva. Just maintain a balance. Something good, Ram Ram. Something bad, Ram Ram. Never allow anyone to tamper with the peace that you have within. Don't allow other people's words to influence how you feel. If we give people that privilege, then we're fighting a losing battle. Try to remain calm. I know it's hard. I find myself many times in dharma sankat predicament, but you have to remain quiet. You must remain quiet. If people say something or not, just let it go. Don't listen to what people have to say. Mamata mamapada kanj. What Tulsidas is saying, that the bhakta holds on to the feet, the lotus feet of Bhagavan as their only possession. Hum kya pakrte hai? We hold on to so many other things instead of Bhagavan's feet. We hold on to so many material things. Please don't misunderstand what I'm saying. You're entitled to artha and kama, have material wealth. Work diligently, honestly, and acquire them. But don't hold on to them. What is yours today was someone else's yesterday. What is yours today will be someone else's tomorrow. Hold on to Bhagavan's feet only. Te sajjana mama prana piya. People who have these qualities are dear to me as life itself. These are the words of Bhagavan Shri Krishna. And in Bhagavad, आप लोग शांत बैठिए please. शांत से बैठिए please. सुनिए. शांत से बैठिए. प्रसाद दे दो जना के प्रसाद. Tulya Dinda Astuti Mauni. Bhagavan, in Bhagavad Gita, chapter 14, verse 24, Bhagavan used a beautiful example. The devotee would remain peaceful in people when people say good things or bad things. Tulya Ninda Astuti Mauni. The person, the bhakta, does not concern what someone has to say, good or bad. So this Chaupai and this verse from Bhagavad Gita, they complement each other. If we are true practitioners of Sanatana Dharma, we have to have these qualities. If not, why do we call ourselves Sanatanis? So next week we're going to review them back in detail, and we try to practice some of these. If not, why? Why we think about spirituality? Something must be said if it is true force so that it registers in our mind, pyare. Because what do we find? Although we come and we study Bhagavad Gita, we study the Shastra, we know what is right. But still, why should I practice it? No one is practicing, why should I practice it? So when we understand saintly qualities, we'll do the right thing at the right time. Shri Ramachandraya Namo Namaha, Shri Krishnaya Namaha.
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय. Wednesday coming Shri Krishna Janmashtami. Puja starts at 6:30 in the afternoon and will conclude at 12 midnight. So you have enough time, come from work, go home, take a bath. If you don't want to come too early, just relax a little bit and come later on from 10 to 11, 10 to 12. Janmashtami Puja must complete. No. Janmashtami Puja must complete at 12 midnight. Can we wait until 12 midnight for Bhagavan Krishna? Look how blessed we are. Look how he has blessed us. We see service sometime from 6 to 8 p.m. Janmashtami service. No. If you're going to do Janmashtami Puja, do it the right way or don't do it. Again, something must be said with the force. Bhagavan came at 12 midnight. So we have to conclude Janmashtami at 12 midnight. So puja starts at 6:30 with Abhishekam and Puja to Bhagavan Krishna. Please come. We usually send out an email for devotees if you like to be part of the email list. That when we have activities at the temple, so all of these parvas, we give all the devotees an opportunity to be part. All of us pull our little resources together. We can buy beautiful garland for Bhagavan. We buy beautiful clothing for Bhagavan. We prepare bhojan as well. So everybody gets an opportunity to be involved. If you would like to be involved in sponsoring something for Janmashtami, please let us know after Arati. Shri Krishnaya Namo Namaha. Priti Bhojanano. We'll offer bhojan now. Om Yete Sahasramayutam Pasha Mrityo Martyaya Hantave Tanyagyasya Maya Sarva Navaya Jahamahe. Shri Krishnaya Namo Namaha. Om Nabhyasirantariksham Shishnodhyav Samart. Amar, come hold it please. Let Amar hold the bhojan. Arun, come touch with the brother. Both of you hold it together. Om Brahmarpanam Brahmahavi Brahmagano Brahmanahutam Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina Prane Swapane Swavyani Swavudani Swa Brahmane Swa Brahmanimatma Naivedyam Samarpayami. Go behind Manji. Ramadut Kripa Sindho Matkaryam Sadhaya Prabhu Naivedyam Samarpayami Ramachandra Murtaye Namo Namaha. Hari Om. Sita Lakshmana Bharata Shatrughna Hanumat Samet Ramachandraya Namo Namaha. Hari Om. Radha Krishna Bhyan Namaha. Hari Om. Naivedyam Samarpayami. We stand for Arati. Please come for Arati, everyone. After Arati, please take Prasad and Priti Bhoj before you leave. Aye, please come. Arati Shri Ramayan Ji ki Kirati Kalit Lalit Siyapi ki Arati Shri Ramayan Ji ki Kirati Kalit Lalit Siyapi ki Avat Brahmadik Muni Narad Balmik Vigyan Visarad Shuk Sanakadi Shesh Arsarad Barni Pavan Suk Kirati Niki Arati Shri Ramayan Ji ki Kirati Kalit Lalit Siyapi ki Bhavat Veda Purana Ashtadas Bhavat Veda Purana Ashtadas Chaho Shastra Sab Granthan Koras Chaho Shastra Sab Granthan Koras Muni Jan Dhan Santan Ko Sarvas Muni Jan Dhan Santan Ko Sarvas Sara Samat Sab Hi ki
आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करत ललित सियपी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संगत मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्ज बखानी व्यास आदि कविवर्ज बखानी काव्य भुषुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करत ललित सियपी की कलिमल हरनि विषय रस पी की कलिमल हरनि विषय रस पी की शुभग सिंगार मुक्ति जुवती की शुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भाव मोरी अमी की दलन रोग की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करत ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करत ललित सियपी की श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम सीता राम 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 सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम 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 हनुमान हनुमान सीता राम हनुमान हनुमान. We clasp our hands and final prarthana. Om Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhoscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Janardana Yat Pujitam Maya Deva Paripurnam Tarastu Me Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Dyauh Shanti Antarikshagam Shanti Prithvi Apah Shanti Aushadhaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishwadeva Shanti Brahma Shanti Sarvamau Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redhi Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma तस्मै श्री गुरवे नमः. बोलिए रामचंद्र भगवान की जय. पवन सुत हनुमान की जय. कृष्ण चंद्र भगवान की जय.
जगदम्बे मैया की जय। हर हर नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। सनातन